Clear? So let's go ahead and dividing circular region area of, let me say, area related to related to circle. It's okay. यही हेडिंग डालेंगे हम। Yeah. Area related to circle. Are you able to see my board? All of you? Yes, sir. And voice is also clear? Fine. So let's just start a new chapter. You have to very concentrate about area of circle. As before this, in the previous classes, previous sections, you have already discussed about rectangle, square, rhombus, parallelogram, etc. But here in this segment, in the area of related circle, we have to go the perimeter and area of related perimeter and areas related to circular figures, means regarding circle. So, so for this all, we will use for a sector, segment, and combination of all plane figures having some circular regions. So circular regions के बारे में हम लोग detail discuss करेंगे for the area of related to circle. So giving step by step. So that is circle and its related term. So giving circle. What is the definition of the circle? So what is a circle? Anybody? Have you knowledge about this circle? Anybody? Whether you have a knowledge about this circle? सर्कल की डेफिनेशन आप लोग बता सकते हैं क्या होगी? बोलो भाई. What is the definition of the circle? Anybody? A circle. A closed figure drawn from a common point. A closed figure drawn from a common point. So from which is common point and what is the closed figure? If I from one common point, if I draw like this way, is this circle? A closed figure with no sides. A closed figure with no sides. So here, what that I'm saying here, side is not there. It's okay. So closed figures, there are a lot of closed figures with no sides. Suppose if you say like this way, then I will say like this way, then here like this and like this. Is this circle? Is this circle? Sir, the distance from the given point is constant. Distance from given point is constant. Yeah, something is there. But लेकिन ये जो पिक्चर आ रही है वो बड़ी धुंधली टाइप की आ रही है. मैं आपको बात बता दें, although these all students are from 10th class, तो 10th class के students हैं तो भाई according to 10th class भी आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए. आप 10th class में भी इतनी बात तो समझ पा रहे होंगे कि सर्किल की क्या डेफिनेशन बन सकती है. तो ठीक कह रहा है, थोड़ा बहुत तो आप नज़दीक है, लेकिन आप 6th क्लास के बच्चों जैसी बात कर रहे हैं सर्किल के बारे में. तो अ सर्किल इज, लिखेंगे डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन सभी लोग लिखेंगे. अ सर्किल इज अ कलेक्शन ऑफ एक्चुअली अगर ये 11th 12th में हम लोग पढ़ते तो कलेक्शन ऑफ जो पॉइंट्स लिख रहे हैं, इसके जगह हम लोग लोकस लिखते हैं, लेकिन ये टर्म आप लोगों को पता नहीं है तो इसलिए मैं कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स लिख रहा हूँ. ठीक है, यानी कि जो स्टूडेंट्स अगर कोई बड़े क्लास के हैं तो वो अगर इस सर्किल के डेफिनेशन को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अ सर्किल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ना लिख करके ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स वर्ड है ना, इसके जगह पे क्या लिखते हैं हम लोग? लोकस लिखते हैं. तो अभी लोकस ऐसा टर्म तो समझेंगे नहीं आप लोग, क्या होता है लोकस. आगे हायर क्लास में हम लोग लोकस के बारे में पढ़ेंगे. तो लोकस इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट अंडर सम गिवन कंडीशन. तो अभी फिलहाल हम लोग कलेक्शन ऑफ पॉइंट से काम चला लेंगे. ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं? कलेक्शन ऑफ पॉइंट से काम चला रहे हैं. ठीक है, तो सर्किल इज अ, आप क्या लिख सकते हैं? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स. सर्किल इज अ
कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ये बोल सकते हैं पॉइंट्स। तो केवल पॉइंट्स कैसा पॉइंट है, ऐसा ऐसा वैसा पॉइंट नहीं है। इन अ यहाँ पे थोड़ा मैं जगह छोड़ दे रहा हूं, आप सोचिएगा क्या लिखना है। विच आर एट अ कांस्टेंट, विच आर एट अ, वो जो बताने की कोशिश कर रहे थे बीच में अभी किसी ने बताया था, कांस्टेंट विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस from fixed point, which are at a constant distance from fixed point, distance from a fixed points, ठीक, in the same, ये fill in the blanks में क्या fill किया जाएगा ये जाना। वैसे a circle is a collection of points which are at a constant distance from fixed point, क्या इतनी डेफिनेशन सही है? ये in the same हटा दें या fill in the blanks हटा दें, क्या इतनी डेफिनेशन सही है? यानी कि अगर हम लोग ये लिखते हैं कि ये देखो, हम लोग ये लिखते हैं a circle is a, क्या लिखेंगे, a circle is a, क्या लिख देते हैं, which are at a point, क्या लिखेंगे, a circle is a collection of points in a points, बस ये लिख दें, ठीक, which are at a constant distance from fixed point, इन अभी हटा दें। तो क्या ये डेफिनेशन सही हो गई? क्वेश्चन समझ में आया? अरे ये जो लिखा हुआ है वो समझ में आया? क्या लिखा है? in a plane. हाँ, इन अ प्लेन लिखना जरूरी है, इन अ प्लेन लिखना यहाँ पे जरूरी है, क्लोज फिगर वर्ड नहीं, समझे, क्लोज अपने आप हो जाएगा, डोंट वरी। ये जैसे ये है तो ये वाला फिक्स पॉइंट हो गया, और ये वाला जो पॉइंट है ना वो मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है किसमें, प्लेन में मूव कर रहा है, तब तो सर्किल, अदरवाइज वो सर्किल नहीं है भाई, अदरवाइज वो सर्किल नहीं है। तो क्या क्या जाएगा, तो वो क्या होगा, स्फीयर हो जाएगा, 3 डायमेंशन में हम लोग आ जाएंगे तो वो स्फीयर बन जाएगा। तो हम लोग को 2 डायमेंशन में रहने के लिए यहाँ पे प्लेन लिखना पड़ेगा, और इन द सेम प्लेन, ये लिखना जरूरी है। अगर प्लेन वर्ड नहीं लिख रहा है ना इसमें, इस डेफिनेशन में प्लेन नहीं लिखे तो वो सर्किल सर्किल नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, स्फीयर बन करके आ जाएगा। समझ में? इज दिस ऑल राइट? अभी सबको समझ में आया सर्किल क्या है? अ सर्किल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन which are at a constant distance from a fixed point in the same plane। यानी कि हम लोग क्या करना है, एक सर्किल बनाने पहले, सर्किल तो मेरे पास ये है, सर्किल वैसे बनाते कैसे है, ये इसका यूज़ करते हैं आप लोग, किसका यूज़ करते हैं, कंपस का यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग सर्किल में के लिए, ठीक है। तो सर्किल के लिए हम लोग यहाँ पे कंपस का यूज़ करेंगे भाई, ठीक है, एक कंपस लेके आएंगे, ये शुरू से ही आप किस क्लास से, 6th क्लास से यूज़ कर रहे हैं ज्योमेट्री बॉक्स, कब से यूज़ कर रहे हैं, अरे भाई। तो यहाँ देखें ये है, यहाँ पे अभी कंपस हम लोग ले लेंगे, इस कंपस को ओपन कर देंगे, ये वाला जो पॉइंट है वो अपना क्या होगा, दैट इज दिस पॉइंट इज फिक्स पॉइंट, ये वाला क्या पॉइंट होगा, दैट विल बी कॉल्ड फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड फिक्स पॉइंट। क्या कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड फिक्स पॉइंट, समझ में? तो दिस इज कॉल्ड फिक्स पॉइंट, समझ में आया भाई सबको? ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये देखो ये डॉट लगा हुआ है, दिस इज फिक्स पॉइंट, तो इसके नीचे हम लोग फिक्स पॉइंट लगा देंगे। और ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये क्या होगा, ये येलो कलर का जो पॉइंट है ना, वो ये येलो कलर का पॉइंट है यहाँ पर। अब हम लोग येलो कलर का पॉइंट ले लेते हैं, ये तो ले ही लिया। अब हम लोग इस कलर का पॉइंट ले लेते हैं, ब्लू कलर का पॉइंट, तो ब्लू कलर का पॉइंट ले लेना है, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करना है, इसको अब हम लोग दौड़ा देंगे, तो इसको कैसे दौड़ाएंगे, देखो, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस है, ये फिक्स पॉइंट से ये वेरिएबल पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स है, तो अभी इस डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे,
ये उठा लेंगे और फिर इसको ये पॉइंट पकड़ लेंगे, ठीक है। तो अभी जो है क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे अगर घुमाएंगे तो ये क्या होगा, एक सर्किल बन करके तैयार हो जाएगा। ये सबको दिख रहा है, ये सबको दिख रहा है क्या मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये फिक्स पॉइंट है और ये क्या हो गया, एक सर्किल हो गया। यही ना हुआ सर्किल, क्यों? तो यहाँ पे रहने वाले सभी पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट जो डॉट लगे हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, वो सर्किल बन करके आएंगे। क्लियर है? क्लियर है? आर यू गेटिंग? तो सर्किल के लिए ये जो है कंपास का जरूरत पड़ती है, ये हम लोग रख सकते हैं। ये हटा दिया हमने, अभी इसको रख ले लेते हैं। इसको ये सर्किल जो हम लोगों ने बना करके रखा है, दिस इज कॉल्ड, ये फिक्स पॉइंट हो गया आपका, ये वाला तो आपका फिक्स पॉइंट हो गया भाई, ठीक है, जहाँ भी है। और यहाँ से जो डिस्टेंस बन रहा है दैट इज कॉल्ड, दिस वन इज रेडियस ऑफ सर्किल। ये लेंथ जो है फिक्स रहेगी, दैट विल बी कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्किल, दैट इज सेट टू बी आर। लेट दिस पॉइंट बी ओ, दिस पॉइंट बी, अच्छा ये यही पॉइंट क्या बन करके आ जाएगा, ये आप देखें, this will be here, that what we call here this is O पॉइंट से ही फिक्स होगा ये पॉइंट। तो ये पॉइंट जो है आपका ये भी आर ही होगा, ठीक है। ये पॉइंट हो जाएगा लेट से बी, लेट से ए, ठीक है। a line segment, what is radius? The line segment joining the center of the circle to a point on the circle is called the radius. ये लाइन सेगमेंट ही क्या बोलेगा, रेडियस बोलेगा। इज दिस ऑल राइट? ये बात समझ में आई? किसी को यहाँ पे डाउट तो बोलेंगे ये सेंटर हो गया सर्किल का, ये वाला क्या हो गया, सेंटर। ओ वाला पॉइंट जो क्या हो गया, सेंटर हो गया, और ओ बी वाला रेडियस हो गया। तो रेडियस की डेफिनेशन समझ में आई? आगे बढ़े। इंटरनल and outer part of circle, outer part of circle का इंटरनल एंड आउटर पार्ट। इंटरनल एंड आउटर पार्ट ऑफ द सर्किल क्या होगा भाई, ये देख लिया है, तो चलो देखते हैं इंटरनल एंड आउटर पार्ट ऑफ सर्किल। तो पूरे प्लेन को ऐसा कोई क्लोज ज्योमेट्री, राइट, विच क्लियर है? तो इसको बारे में क्या लिखेंगे, लिख ले रहे थोड़ा। मतलब कोई भी, हालांकि जैसा कि उन्होंने बताया कि ये जो ज्योमेट्री है ये क्लोज ज्योमेट्री है, तो क्लोज ज्योमेट्री पूरे प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करती है, कोई बताएगा? एनी क्लोज ज्योमेट्री प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करती है? यस, वेरी गुड। थ्री कौन कौन से पार्ट हो गए? On the periphery, exterior and interior. करेक्ट। इंटरनल और आउटर, और वो फिगर खुद। तो अ क्लोज ज्योमेट्रिक, बढ़िया नॉलेज है भाई। अ क्लोज ज्योमेट्रिक फिगर, ठीक है, इन द प्लेन, ये जानना जरूरी है। इन द प्लेन डिवाइड्स द प्लेन, पूरे प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करेगा? डिवाइड्स द प्लेन इनटू थ्री पार्ट्स। थ्री पार्ट्स के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे हम लोग, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्री पार्ट्स, और थ्री पार्ट कौन कौन से होंगे पहले ये जान ले आप लोग। जो लोग नहीं जानते हैं उसको नोट कर ले, थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते भाई। कई लोग समझते हैं टू ही पार्ट्स में, अंदर का और आउटर, इंटरनल और आउटर पढ़ा रहे हैं तो इंटरनल आउटर समझ रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। ऑन द बीट रहेगा, ठीक है। तो व्हाट आर द, इफ यू नेम देम दीज ऑल पार्ट्स, तो पहला है द इनर पार्ट,
the inner part. ये inner part also called internal part. और फिर क्या है, इसको बोलेंगे the inner part of the figure, inner part of the मतलब जैसे इसमें हम लोग किसी फिगर के लिए भी बोल रहे हैं, नॉट ओनली फॉर सर्किल, और भी फिगर बन सकते हैं, जैसे पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो कैसा भी शेप आएगा, जैसे कि अगर क्लोज्ड फिगर कोई एक इलिप्स का शेप आ रहा है, तो वो भी इंटरनल, आउटरनल, एक्सटर्नल और ऑन द पार्ट, तो इनर पार्ट ऑफ द फिगर। और सेकंड क्या है, फर्स्ट तो ये होंगे आपका, सेकंड क्या होगा, द फिगर इटसेल्फ, द फिगर होगा। और थर्ड पार्ट क्या होगा भाई, थर्ड पार्ट क्या होगा, आउटर पार्ट। थर्ड पार्ट क्या होगा, आउटर पार्ट ऑफ द फिगर, आउटर पार्ट ऑफ द फिगर। समझ में आया सबको? तो अगर हम लोग ये बनाएंगे तो फॉर सर्किल, फॉर सर्किल अगर हम लोग बना रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा सर्किल बन गया, छोटा सर्किल बना लेते हैं। एक सर्किल बना लो भाई, एक सर्किल हम लोगों ने बनाया, मान लो अब इसमें एक इनर पार्ट हो गया और एक आउटर पार्ट हो गया, तो इंटरनल पार्ट को हम लोग शेड कर देते हैं, ठीक है। Sir, can you move slightly? श्योर, जस्ट वेट प्लीज। दिस इज द, ये कौन सा पार्ट हुआ, ये जो अभी जस्ट कलर हमने किया, ये द फिगर हुआ, ठीक है, ये सर्किल हुआ, एग्जाम्पल सर्किल का ही ले रहे हैं। फिर अभी जो है इसका इनर पार्ट क्या हुआ, इफ यू से दैट इज द, दिस विल बी द इनर पार्ट, ये वाला क्या हुआ, ये वाला पार्ट इनर पार्ट हो गया और बाहर वाला आउटर पार्ट हो गया। तो दिस इज, यू से दैट वी कॉल, रिकॉल एज दिस एज इनर पार्ट। ये क्या हुआ, इनर पार्ट, इनर पार्ट, ठीक। और ये जो ब्लू वाली लाइन से लिखा गया है वो क्या है, वो अगर हम लोग फिर से देखें, और थोड़ा डार्क कर देता हूँ मैं, जो है इसी बात को, और डार्क ले रहे हैं तो ये आप ले लो, ठीक है, या फिर ब्लू से लिख देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा ईजी रहेगा बात को समझना। तो ये तो इनर पार्ट हो गया आपका, इनर पार्ट में ये इनर पार्ट हो गया भाई, ठीक है, ये इनर पार्ट हो गया आपका। और अभी ये द फिगर हुआ, ये वाला, अच्छा बाहर वाला जो सरफेस है वो क्या हुआ, वो वाला अपना आउटर पार्ट हो गया, बाहर वाला जो सरफेस हो रहा है वो वाला क्या हो गया, दैट इज आउटर पार्ट। अब चूंकि ब्लैक से तो मैं लिख नहीं सकता हूँ, पूरा ब्लैक वाला जो सरफेस है वो आउटर पार्ट हो गया, दिस इज आउटर पार्ट। और जो ब्लू वाला सरफेस है ऑन द सर्किल हुआ, ये जो ब्लू वाला सरफेस है वो क्या हुआ, ऑन द सर्किल। ये फिगर इट सेल्फ हुआ, ये जो है ब्लू वाला है द फिगर ही हो गया, ये वाला, ये ब्लू वाला जो है ना वो द फिगर हो गया। तो ये क्या हुआ, ऑन द सर्किल, सर्किल यानी सर्किल, ये ब्लू वाला पार्ट ही सर्किल है, और सर्किल का इनर पार्ट है, सर्किल का आउटर पार्ट है। तो कोई भी क्लोज ज्योमेट्री तीन पार्ट में डिवाइड करती है, एक तो वो पेरीफेरी पर, सही कहना है, ये इसको पेरीफेरी भी बोलते हैं, सही बात है, पेरीफेरी लिख सकते हैं, पेरीफेरी पर, और एक इनर पार्ट ऑफ द पेरीफेरी, एक आउटर पार्ट ऑफ द पेरीफेरी, समझ रहे हैं, ये बाउंड्री इसको भी बोल सकते हैं आप। चलिए, तो ये सब टर्म्स हैं, हम लोग को जानना पड़ेगा जो है ये सब। अब एक दो और छोटे छोटे टर्म्स जान लें। हाँ, आप क्या कह रहे थे ऊपर दिखलाने के लिए, हो गया कि आगे बढ़े, हो गया तो बोल देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। चले, होप सो हो गया, आगे बढ़े। Okay, fine. So give it a chord. What is chord? Yes. Anyone?
बताएंगे क्वाड क्या होता है? व्हाट इज क्वाड? बोले भाई, तब तक मैं, आप लोग जब तक बता रहे हैं मैं क्वाड बना देता हूँ। क्वाड कोई एक्सप्लेन करेगा? व्हाट इज क्वाड? व्हाट डू यू से टू क्वाड? A straight line whose endpoints lie on the circle. फिर से बोलिए प्लीज। A straight line segment whose endpoints lie on the circular arc. A straight line segment whose end points are, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट तो आपने सही बोला, पहले लाइन बोला था ना शायद, तो अभी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट बोला, ये सही आपने बोला, मैं ये इसलिए दोबारा आपसे बुलवाया, तो आपने दोबारा तो करेक्ट कर लिया। स्ट्रेट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्किल, अर्क बोलने की जरूरत नहीं है, सर्किल का कोई भी दो पॉइंट, कोई अर्क थोड़ी बोलने की जरूरत है, ठीक है भाई, अर्क बोलने की जरूरत नहीं है, सही है, पहले बल्कि आप सर्किल बोल रहे थे, अभी अर्क नहीं। ये अगर हम लोग अगर इसको ज्वाइन करें, यानी ये वाली जो डायमीटर लाइन हो गई, ये सेंटर से होकर के पास करिए, तो क्या ये कॉर्ड नहीं है? सेंटर से जो जा रही है ये ए बी लाइन, ये तो कॉर्ड है ही, और ये क्या सी डी लाइन, अगर डायमीटर को हम लोग देखें, दिस इज ओ विच इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो सी डी क्या कॉर्ड है कि नहीं है? यस और नो? सी डी इज द कॉर्ड और नॉट? सी डी इज द डायमीटर, सी डी क्या है? डाया है, डायमीटर, डायमीटर, तो डायमीटर इज कॉर्ड और नॉट? बोलो, It is a no. इज इट कॉर्ड और नॉट? यस और नो? Yes, sir. Wow. यस, इट इज ऑल्सो अ कॉर्ड, तो इसलिए अर्क नहीं बोलेंगे, ठीक है। अ लाइन सेगमेंट, और बाकी आप सही बोली थी, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स, ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स, एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्किल, बस सर्किल बोल देंगे, ठीक है, अर्क नहीं बोलेंगे, सर्किल बोलेंगे, सर्किल इज कॉल्ड अ कॉर्ड, इज कॉल्ड अ कॉर्ड, ठीक है, इसी को कॉर्ड बोलेंगे, ठीक, chord. A chord passes through the center of the circle is called diameter. जो chord center से पास करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? diameter बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे भाई? diameter. A chord which is passes through center is called diameter. ये बोल सकते हैं आप चाहे, ठीक है। CD is the diameter, ठीक है। diameter you can say this is the longest chord of the circle. diameter, diameter is the longest chord of the circle. Diameter you can say is the longest chord, diameter is the longest chord, longest chord of the circle, of the circle, okay, diameter, आगे भी लिख लो। तो ये देखो, ये आपका डायमीटर हो गया, डायमीटर हो गया, डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ अ सर्कल, अच्छा डायमीटर क्या होगा? डायमीटर इज सर्कल इज ट्वाइस द रेडियस, डायमीटर ऑफ द सर्कल इज क्या होता है? वो ट्वाइस ऑफ द रेडियस, तो लेट दिस लेंथ बी डी, ठीक है, और दिस बी आर, सो डायमीटर क्या होगा? इसमें दो रेडियस हो जाएंगे। व्हाट इज आर्क? व्हाट इज आर्क? आर्क ऑफ द सर्कल एंड हाउ इट रिप्रेजेंट्स, so dividing arc, what is the arc of the circle? Yes, anybody? Definition of arc, लोग arc के बारे में देखें। arc Curve with two endpoints. yes, Curve with two endpoints. which point? Curve with two endpoints.
with two endpoints. From where the two endpoints? On the periphery. Of the circle. You can say also, what is circle? This green part is only the circle. So you can say a part of circle. A part of circle is called an arc. Is called an arc. Nothing else. Is called an arc. It's called an arc. Right? Bus. This much is sufficient to say. A part of circle is called an arc. So if we draw this circle like this way, we draw the circle like this part, okay, and we make like this way. We just divide any segment here, and what do we say here? Divide the shape in two segment, or suppose fifth segment, and we eliminate one of the part. This is like 1/5 part. So this part is called said to be arc. This part is said to be arc. This length will be said to be an arc. Okay. So part of circle. In this part of circle, this will not be considered. Only the periphery part will be considered. Means you have to consider this part only. So this part is said to be arc. This part. This part is said to be. Hope so you are getting. समझ में आया? अर्क क्या है? ये वाला पार्ट. ये वाला पार्ट. ये पार्ट. दिस पार्ट इज सेड टू बी अर्क. ठीक. यहाँ पे ये अर्क बनेगा. ऐसे ही कोई भी पार्ट यहाँ से निकाल सकते हैं. सर्कल का ये 1/5 पार्ट हम लोगों ने निकाला. तो अगर इसको हम लोग कंसिडर करते हैं यहाँ से, तो दिस विल बी द अर्क. इट्स ओके. अब ये कैसा भी बड़ा बन सकता है, छोटा बन सकता है, ठीक है. और ये एंगल कम भी हो सकती है. ठीक. किसी भी तरह का पार्ट निकाल लिया हम लोगों ने, तो दिस इज कॉल्ड अर्क. ये एक अर्क. दीज आर द अर्क. येलो वाला पोर्शन अर्क हो गया. ठीक. तो अगर किसी डायग्राम से हम लोग ये अर्क निकाल रहे हैं, तो इसको डिनोट करने का क्या फैशन है? ये जैसे दिस इज द पॉइंट्स है, सपोज ए, बी और ये सी. तो इसको ऐसे डिनोट करने का फैशन, दैट इज कॉल्ड अर्क. ऐसे. ठीक है. ए बी सी ऐसे ही है अर्क का फैशन. ये डिनोट करने का अर्क फैशन. अर्क को डिनोट करने का फैशन क्या है? ए बी सी लाइक दिस. ऐसे थोड़ा ब्लंट रखेंगे, एकदम नुकीला नहीं रखेंगे, गलत हो जाएगा. तो कैसे रखेंगे? थोड़ा ब्लंट रखेंगे लाइक दिस. ऐसे ये ब्लंट रखें इसको. तो दैट इज कॉल्ड अर्क. समझ में? नाउ गिविंग सेमी सर्कल, सो दैट वी से सेमी सर्कल. समझ में? अर्क. सेमी सर्कल क्या हुआ है? सेमी सर्कल. व्हाट इज सेमी सर्कल? सेमी सर्कल लेके यहाँ पे. तो सेमी सर्कल की डेफिनेशन क्या होगी? बताएगा? सेमी सर्कल क्या हुआ? Area enclosed by the diameter and the arc. Diameter of circle actually divides circle into two equal arcs. Two equal, not parts. Two equal arcs. ठीक है. Diameter क्या करेगा? Two equal arcs में divide कर देगा. तो once one of the segment will be that, जो segment नहीं उसको क्या बोलेंगे? One of the arc is that is each known as semicircle. You can say each of the arc will be known as semicircle. तो एक हम लोगों ने पहले सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये दिस वन. अब ये डायमीटर क्या करेगा? डायमीटर इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा. डायमीटर पूरे सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा. तो डिवाइड शेप दिस इनटू टू पार्ट्स. अब देखो ये डायमीटर डिवाइड्स इन टू पार्ट्स. सो वन ऑफ द पार्ट इज हियर दैट वी कॉल सेमी सर्कल. ये ईच पार्ट इज सेमी सर्कल. ये क्या हुआ? ये भी एक सेमी सर्कल हो गया.
This is also semicircle, and this will be also, you can say, semicircle. So this will be here, that is called semicircle. Let's say this part. Let's say this part. This part. So this is also semicircle. Clear? Both of them are semicircle. But in this semicircle, this part, this diameter will not be considered. Only arc part. The arc part is called semicircle. So no need to write the definition. Sector, yes. What about sector? Then what is the definition of semicircle? Semicircle definition I told over there. May I write this here? I have to write. Let me write here the definition of semicircle. Yes. The definition of semicircle you can say like this way. Slip here. Okay. This both of them are semicircle. What I told the definition? The definition of the semicircle will be that a diameter, first of all, you have to come with diameter. Actually, arc is the semicircle, not diameter. Diameter what does? A diameter of circle, of any circle you can say, of a circle, divides a circle. A diameter of a circle divides a circle into two equal parts. Just like here, right? Two equal. You can say rather than parts, but better just this will be good to write arcs, as we have already discussed arcs. We have already discussed about arc, so better you write arc instead of parts. Although arcs are the parts of the circle. A part of circle is called arc. So you can say two parts also, but better just write technical term arcs, right? As you have learned arcs. So each known as each known as a, this is the definition. This will be the definition over here. Each known as a semicircle. See over here. Each known as semicircle. Clear? For everybody? Each known as semicircle. Is this all right? This will be the definition. Yes, sir. Semicircle. And you see here, if we write this one, let's say P, Q be the diameter. So P, let's say this is R, any point. So you can denote this as PRQ is a semicircle. PRQ is semicircle. Here, if you write that same PQ, because it is also coming from same circle, let's say A, so PAQ is also a semicircle. PAQ is also a semicircle, correct? Now come to point sector. Area enclosed by an arc and the two radii of the circle. Arc and two radii. Two radii of the circle. But here you have to say end points which you are missing, and you are saying on that situation. So although definition is all correct, better just write like this way: the region, and all others are what you stated, that is correct. The region bounded. If you write like this way, then this will look better. The region bounded by an arc. This you were stating correct. Arc of a circle, and you said that two radius. Yeah, this also you have said two. But two radius, don't say two radii. This is a plural of radius. Two But I radii. have told radii only. Yeah. That's great.
at its end. At its end. This much you have written, but just you have mentioned at its end points also. At its end points. At its this you haven't mentioned. End points. End points is called sector. Then it's look better. Called a sector. Okay, the region bounded by an arc of a circle and two radii at its end, if you write at its end points, is called, it means that is, you can say at its end points is called a sector. Okay, this is okay. Now let's draw the sector. Draw the sector, yes. Once you have to draw a circle simply, and then we have to draw like this way. So this part will be said to be, let me draw a circle first. Let this be circle, and this what we say here. This is, suppose this is a radius of one end and another radius. So if you consider any arc here, what the definition was, the region bounded by an arc. This is the arc part, right, of a circle, and two radii at its ends points is called a sector. Okay. So if we use like this way, let's see over here. Yes. And let's see this part. So this part is the sector. The shaded region will be the sector. Okay. Is this clear? The shaded region will be the sector. Is this clear? This part is sector. Let's say this is O, this be P, this be Q. So PQ is the arc, and this is the radius, and joined with the two ends. Let's say this is OP. So OPQ sector is there. So better just write R also, so that we can't say, because when we put instead of RT, then OPQ sector will be considered with T. Then this will be also the remaining part of the circle is also a sector, right? So you can see over here that where the sector is, the shaded portion is a sector formed by P. What do you have to say? PRQ, PRQ arc, and the unshaded portion is PTQ arc. This is sector or not? PTQ is sector or not? The major sector. Yeah, this will be also sector, right? So means you have to say here by this two radius OP and OQ, we find two different sectors, PTQ sector and PRQ sector, right? So sectors are PRQ as well, that is PTQ. PRQ is shaded sector, shaded region, shaded portion you can say, right? Shaded one, and this is unshaded. Unshaded. This both of them are said to be sector. This both of them are said to be sector. Right? This both of them are said to be here sector. Clear? This both of them are said to be sector. Okay, fine. So both of them are sector, correct? Shaded and unshaded sector. Now, one thing we have to go for segments. Give it a segments. Segments of circle. Yes. With the segments. So, what we recall for segment? Anybody? What is the segment? Let me draw segment first. What is this? PQ, this chord, and you see here that is, you can recall as
like this part, okay, this part are the segment, okay. So these all parts are here the segments, okay. So this is the part of segment. This is smaller segment and this is larger segment. Once again, so how is defined segments? A chord divides the interior of a circle into two parts, each called a segment. Right? The segment in which the center of the circle does not lie. Center is here. The segment in which the center of circle, say this is center does not lie, will be said to be minor segment. What do you have to say? This is minor segments. And the segment where the center lies, that is called major segment. That is called major segment. Is this all right? This you can write also. No need to write over here. Minor and major segment. Here the shaded segment is shaded region of the segment is the minor segment, and this one is called major segment. Unshaded part. Is this all right? May I proceed further? Perimeter and area of circle. Let's take a review over here. It's okay. So given perimeter and area of circle. So let's see. Okay. Let's see over here. Okay. Think about perimeter and area of a circle. Although you all know well, but we will review this. It's okay. Review perimeter and area of circle. Clear? Let's see. What is the perimeter and area of? So you see here, let me draw a circle first. Yes, this is the circle. Fine. So let's see, this is the circle. And here what we will do, that as you know, this is the diameter. Okay, this is the diameter over here, and this will be the radius that you see here. Let me see radius. This part. So this is here. Let's say radius r. Okay, let this be r, and this be you said d length. D is the diameter. Okay. So you see here that circumference. What is circumference? Circumference. Circumference is equal to pi times of diameter. Right. So that what we means here, that is called pi into, as diameter is twice of radius, so r is the radius of circle, and the value of pi you can to say 3.14 dot, right?
or just for sake of calculation, you can use 22 by 7, although this is not the value of pi. This is just for sake of calculation you can do over here. But avoid to write pi 22 by 7. Is this alright? Now limit point here. Sir, Yes. sir, why do we use pi in formulas of circle? Pardon? I'm not getting, just to make a numerical values, numerical calculation. Numerically, if r is given here 7, then pi you can choose 22 by 7 to just retaliate this 7 just for sake of calculation. Sake of ease of calculation, we can use 22 by 7 sometimes. Although nothing to worry about this, pi is equal to 3.14 dot. You have to consider as this is an irrational number. Is this alright? Now, go ahead for perimeter. Perimeter or circumference? Perimeter or circumference, circumference of a circle, as we have seen that 2 pi r, or you can say pi into d, which is where r is the radius and d is the diameter of the circle, right? Now area of circle will be area of circle. If you see the area of circle, that is pi r square. What is that? Pi r square, or you can say here pi into d square by 4. Is this all right? Pi into d square by 4 we can see. Is this clear? Are you getting? Yes, sir. Okay. Okay. So if I show you here that how these all becomes the area of circle, are you able to see?